लेकिन आजादी के बाद सही संवैधानिक शासन नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की और क्षेत्र की जनता की हमेशा उपेक्षा होती रही। केंद्र सरकार ने लगातार हमारे क्षेत्र के विकास के लिए धन आवंटित किया, लेकिन धरातल तक वो पैसे राशि नहीं पहुंच पाई। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं, चाय बागान बंद हो रहे हैं, सिंकोना बागान बंद हो चुका है और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। इसके कारण युवा बेरोजगार है और पलायन करने को मजबूर है। राज्य सरकार और वहां पे जो जीटीए व्यवस्था है अभी हाल में, उसके व्यापक भ्रष्टाचार के कारण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं से जनता वंचित है। पूरा क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इसके कारण जनता पीड़ित है। संवैधानिक अधिकारों से जनता वंचित है और यहाँ तक कि कई गांव मिनी पाकिस्तान के नाम से बन चुके हैं। गोरखा हो, राजवंशी हो, आदिवासी, कोच, मेचे, टोटो, बंगला भाषी, हिंदी भाषी और अन्य मूल निवासी वो खतरे में है और हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, परंपरा और हमारी अस्तित्व पर खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी चिकन सिलीगुड़ी चिकन कॉरिडोर क्षेत्र बहुत ही सुरक्षित रखना अनिवार्य है और मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूं कि सर हमें न्याय मिले। हमें भारत के संविधान के तहत स्थायी समाधान चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों का शासन सुनिश्चित करे। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, कृपया स्थायी समाधान में तेजी लाएं ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले और हम स्वाभिमान के साथ जी सके। जय हिंद, जय गोरखा। श्री एस मुनिस्वामी जी। ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ದಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ರೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ टेक्स्ट पढ़िए, केवल टेक्स्ट पढ़िए जो आपने लिख करके दिया है 377 में, उसी को और मेल में भी डालने लिख के भी दिया सर। हाँ ठीक है, मेल में भी डालना। हाँ जरा उससे ज्यादा हटिए मत उससे जी प्लीज। बोलिए। There should be no change in that. Just read that. Okay. ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಅನೇಕ ರೈತರ ಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಉಳುವವನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಮಾಲೂರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಣ್ಯ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಏಕಾಏಕಿ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾವಿನ ತೋಟ ಹಾಕಿದ್ದಂತ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಜೆಸಿಬಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೇನು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಇವತ್ತು ರೈತನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಸಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡನೀಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು, ಅನ್ನದಾತರು. माननीय सदस्य, जो पाठ आपने दिया है, जो whatever you have given in written, only that goes उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, उसी के बारे में बात माने जो आपने लिखा है। प्लीज लिसन मी, जो आपने लिख करके दिया है केवल उसी को पढ़िए। 377 में only that matter goes on record. What are you are speaking? ओके सर, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। yes, इसलिए ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನು ನಾನು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 16 ಸಾವಿರ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ
IFS ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಸಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थैंक यू। श्री अरुण कुमार सागर जी, जो पाठ आपने लिख करके दिया है उसी को कृपा करके पढ़िए, वही रिकॉर्ड में जाएगा। जी हाँ करें, प्रारंभ करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने नियम अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 377 के अधीन मामला उठाने का अवसर दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्रुखाबाद, अल्लाहगंज, जलालाबाद, शाहजहांपुर, वाया खुटार, मैलानी, जिसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, नई रेलवे लाइंस को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसका सर्वे कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन इस परियोजना पर अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उपरोक्त रेलवे लाइन के स्थापित किए जाने से जहां शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत जो अत्यंत पिछड़े जिले हैं, मान्यवर, इन जनपदों को दूरी ग्रामीण अंचलों रेलवे नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। वही सैन्य छावनी के कारण शाहजहांपुर और फतेहगढ़ जैसे सुरक्षा की दृष्टि से सामाजिक केंद्रों का जुड़ाव सीधे मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, टनकपुर स्थित छावनियों से होने पर संवेदनशील रहने वाली उत्तरी सीमा को और अधिक मजबूती प्रदान होगी। माननीय अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए फर्रुखाबाद मैलानी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु धन का आवंटन शीघ्र किया जाए, ताकि क्षेत्र के विकास के साथ साथ देश को सामाजिक दृष्टि से भी मजबूती मिल सके। माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विष्णु दयाल राम जी, जी धन्यवाद सभापति जी। कोविड-19 के दौरान बंद की गई बरवाडीह चौपन चुनार पैसेंजर ट्रेन संख्या 53351, 53352 का परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं होने से पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों क्रमशः नगर उटारी, रमना, मेराल, गढ़वा, गढ़वा रोड, तोलरा, लालगढ़ बिहार, रजहरा, कजरी, डाल्टनगंज एवं चिवाकी के यात्रियों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त ट्रेन का परिचालन पुनः प्रारंभ करने की जनता के द्वारा लगातार मांग की जा रही है। साथ ही रांची चौपन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18613, 18614 एवं पटना सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस संख्या 23347, 23348 का ठहराव मेरार रेलवे स्टेशन पर नहीं की जा रही है। विदित है कि उक्त स्टेशन पर एकमात्र 54 गोमो पैसेंजर ट्रेन रुकती है तथा कोई अन्य पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया। मेराल स्टेशन से रमना स्टेशन और गढ़वा स्टेशन की दूरी लगभग बराबर है, 11 किलोमीटर की दूरी है, जिसके कारण वहां की जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि ट्रेन संख्या 53351, 53352 का परिचालन पूरा प्रारंभ करने एवं ट्रेन संख्या 18613, 18614 एवं संख्या 23347, 23348 का ठहराव बेराल स्टेशन पर करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री नारायण भाई कचाड़िया जी, डॉक्टर उमेश जाधव जी, स्पीकर सर,
First time I'm speaking in new Parliament House. Sir, in India's 9th Vande Bharat Express between Mumbai CSTM to Solapur 2225 22226 has started on 10/2/23 and is running across Maharashtra. I would like to bring to your kind notice that Gulbarga, that is Kalburgi, is the zonal headquarters of 6 districts of Kalyan Karnataka region. If this train is extended up to Kalburgi, then it would be a great boost to the economy of this region. Has more than 10,000 people travel to Mumbai every day. Considering the time taken on to reach Mumbai, it will be great help for the business community. There is no dedicated train between Kalburgi to Bangalore, which is 4th largest city in Karnataka. There is a huge passenger movement from Kalburgi to Bangalore, and all existing trains are always full, making it hard for general public to get confirmed berths. Further, due to the opening of third coach terminal at Bayapanhalli in Bangalore and doubling and electrification between Guntkal, Bangalore, which is almost complete, it is time now to introduce a new Kalburgi Bangalore overnight train. Kalburgi is having the pit line, so both trains can easily be maintained at Kalburgi station. Thank you. श्री अशोक कुमार रावत जी। मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिक के अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 731 पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि संडीला विधानसभा की पड़ता है और संडीला कस्बा भी वहां पर पड़ता है, जिसमें इस निर्माण को लेकर के वहां पर संडीला कस्बे में काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहां की जनता ने एक सिंगल पिलर पर एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण की लगातार मांग कर रहे हैं, जिसको मैंने दिशा समिति में भी उठाया है और माननीय मंत्री जी से भी मैं व्यक्तिगत मिलकर के रखा है, और इसके लिए नियम 377 में पहले भी मैं रख चुका हूं। मेरा सदन से अनुरोध है कि संडीला कस्बे में नेशनल हाईवे 731 पर सिंगल पिलर पर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान हेतु सकारात्मक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। श्री गोपाल जी ठाकुर, श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल। अच्छा, ठीक है, गोपाल जी ठाकुर जी। आदरणीय सभापति महोदय, मंत्री जी से बताने की कृपा करेंगे कि क्या नमामि गंगे योजना के तहत दरभंगा बिहार का चयन वर्ष 2018 में हुआ था और इस योजना के तहत पहले चरण में 2 प्रमुख नदियां शहर के पश्चिम दिशा में बहने वाली बागमती नदी एवं पूरब बहने वाली कमला नदी की स्वच्छता को लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें शहर के 23 बड़े नाले का गंदा पानी बागमती नदी में, वहीं डीएमसीएच से छपरा घाट तक का गंदा पानी कमला नदी में गिराया जाता है। इसी गंदगी से बचाने हेतु यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना था, जो योजना के चयन और स्वीकृति के करीब 5 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। वहीं बागमती नदी के तट पर स्वीकृत शवदाह गृह का निर्माण भी नहीं किया गया है। इसके अलावा दरभंगा नगर निगम अंतर्गत अवस्थित दिग्घी, हराही व गंगा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी लंबित है। नमामि गंगे योजना के तहत दरभंगा में अभी तक एक भी एसटीपी निर्माण नहीं हुआ है। क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सभी कार्यों की यथास्थिति और प्रगति क्या है? वहीं बागमती नदी की गाद सफाई और घाट निर्माण के साथ शहर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए अब तक कितनी राशि किस मद में आवंटन किया गया है तथा मंत्रालय द्वारा इसके जल्द क्रियान्वयन हेतु अब तक कौन कौन सी कदम
उठाए गए हैं। धन्यवाद। श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल जी। जी धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं खरगोन बड़वानी जनजातीय लोकसभा से आता हूं और आज मुझे नियम 377 के अधीन मेरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर मिला है। मेरी लोकसभा ट्रेन विहीन है, वहां पर रेल की पटरी तक भी नहीं है और उसको लेकर एक बहुउद्देशीय रेल परियोजना खंडवा से धार वहाय खरगोन बड़वानी जो कि विगत कई वर्षों से लंबित है, उसके सर्वे का कार्य सेंट्रल रेलवे को सौंपा गया था। वर्तमान में सर्वे की क्या स्थिति है? यदि उक्त सर्वे कार्य को पूर्ण हो चुका है तो फाइनल लोकेशन सर्वे कब तक कराया जाएगा? उक्त रेल परियोजना क्रियान्वयन हेतु रेलवे मंत्रालय की आगामी रूपरेखा क्या होगी, जिससे बहु प्रतीक्षित परियोजना का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र मेरे आदिवासी लोकसभा को, यहाँ के जनजाति लोगों को मिल सके, यह मेरा निवेदन था और आग्रह था। पहले भी कई बार मैंने प्रश्नकाल के दौरान और माननीय मंत्री जी के द्वारा उठाया गया है। ये मैं इस धारा 377 में रखना चाहता हूँ। श्री अशोक महादेव राव नेते। धन्यवाद सभापति महोदय। महाराष्ट्र राज्य में मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली चिमूर लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ देश का सबसे बड़ा दुर्गम और नक्सलवाद से प्रभावित पिछड़ा क्षेत्र है। गढ़चिरोली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर गोंदिया जिले में बिरसी स्थान पे एयरपोर्ट स्थापित किया गया था। इस एयरपोर्ट से विमान सेवाएं प्रारंभ भी हुई थी, लेकिन वर्तमान में बंद पड़ी हुई है। दूसरे गढ़चिरोली से नागपुर जो एयरपोर्ट है उसकी दूरी भी गढ़चिरोली से 200 किलोमीटर की है। जिला कलेक्टर गढ़चिरोली द्वारा गढ़चिरोली में एयरपोर्ट की स्थापना कराए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अब तक इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गढ़चिरोली में एयरपोर्ट की स्थापना किए जाने हेतु सार्थक कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रक्षा खड़से जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में विकास किसानों के लिए कार्यकारी सहकारी सोसाइटी, विविध कार्यकारी सोसाइटी एक अहम भूमिका निभाता है। मेरे जलगांव और बुल्डाना जिले में 900 से अधिक सोसाइटी कार्यरत है, जिसमें से 550 से अधिक सोसाइटी के हाल ही में हुए ऑडिट के अनुसार कई अलग अलग कार्यकारी समितियों में प्रतिकूल असमानता दिखी वहां पे, और ये बहुत गंभीर और चिंताजनक मामला है। विकास सोसाइटियों के इस डिफरेंस के कारण किसानों को काफी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान टाइम पे लोन नहीं चुका पाते हैं और भारी बारिश और तूफान जैसी प्राकृतिक आपत्तियों के कारण किसान समय पे क्रॉप लोन नहीं भर पाता है। तो मेरी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से विनती है कि सरकार इन सोसाइटियों को सब्सिडी उपलब्ध करवाए, जिसके कारण किसानों को इसमें फायदा हो सके। धन्यवाद। श्री राजीव प्रताप रूडी जी। श्री उन्मेष पाटिल जी। नहीं है। श्री सुजय विखे पाटिल जी। श्री मितेश पटेल जी। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। मैं हिंदी में बात करने की इजाजत चाहता हूं सभापति महोदय जी। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान हमारे उस वक्तव्य की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं जिसमें नियम 377 के तहत खतौरी, घटवाल, घटवार और अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने का मुद्दा उठाया गया। हमें इसके लिए जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री का जवाब तो मिला है, लेकिन अब तक इस मामले में राज्य सरकार के कारण कोई प्रगति नहीं हुई है।
इसलिए आज मैं इतिहास के पन्नों से एक किताब का जिक्र करना चाहता हूं कि एक किताब जिसका शीर्षक है द लिटिल वर्ल्ड ऑफ एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसे आर कास्टेयर्स द्वारा लिखा गया है और 1912 में मैकमिलन एंड कंपनी लंदन द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में इस तथ्य का एक संपूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि संथाल परगना 1855 में बनाया गया था और इसलिए यह बंगाल के सभी जिलों में सबसे छोटा था। लेखक द्वारा इसमें घटवाल, घाटों के संरक्षक और खेतौरी आदिवासियों के दर्द का विवरण भी दिया गया है। कैसे 1790 में अस्थायी बंदोबस्त के समय उनके क्षेत्र के हर हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अस्थायी बंदोबस्त के समय इस पूरे क्षेत्र में एक भी संथाल आदिवासी नहीं था। भुइयां, खेतौरी, हिंदू, मुसलमान, बड़े जमींदार सभी थे, पहाड़िया थे, लेकिन एक संथाल नहीं था। इतिहास के पन्नों में यह तथ्य गवाह के रूप में मौजूद है कि जब इन निष्कर्षों को रिकॉर्ड किया गया था और जब यह किताब प्रकाशित की गई थी, तब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की व्यवस्था उस प्रकार से मौजूद नहीं हुआ करती थी जैसा कि आज प्रशासनिक रूप से यह अस्तित्व में है। इसीलिए हमारा मानना है कि सही मायने में इस क्षेत्र के मूल निवासी वे हैं जो अपने वास्तविक दर्जे व अधिकारों से वंचित हैं और अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता पाने का दावा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Chair. I wish to draw the attention of the Honourable Minister of State for Science and Technology to the urgent need to reconstitute the joint consultative mechanism within ISRO and the Department of Science. The JCM was introduced by the government as a negotiation mechanism for employees in government offices as far back as 1963. In the case of ISRO and DOS, a re-verification process is supposed to take place every 5 years, wherein employees can vote and elect two recognized service associations to the governing and administration councils of these two premier bodies. The elected service associations would then be qualified and authorized to participate in the JCM for a period of 5 years. However, the last verification process took place in 2014, and there has been no attempt to reconstitute such a process in the past 9 years under the present government. As a result, there currently exists no suitable negotiation forum to raise a number of legitimate and pending issues relating to employees' welfare, working conditions, and benefits. This has naturally had an adverse effect on the morale of employees who feel disenfranchised by the lack of a consultative platform to air their grievances. I therefore urge the Minister to reconstitute the process of the JCM within ISRO and the Department of Science so that there is a democratic way of dealing with issues of employees regarding improving safety, security, health and welfare, and to ensure that you can increase productive efficiency. Thank you, Mr. Chairman. श्री सुरेश कोटिकुनिल जी। Thank you, Chairman, sir. The suffering and agony of paddy farmers in Kutanad region, in particular, and Kerala state, in general, need to be addressed and resolved immediately. The paddy farmers of Kerala are given their dues as bank loan by means of paddy receipt sheet by the state agency Supplyco, and this impractical system has created untold miseries for paddy farmers, and paddy receipt sheet system must be revoked, and paddy farmers must be paid their dues indirectly in their bank accounts immediately after procurement of paddy. The central government must take immediate steps in releasing any funds that are in arrears for the state government to disperse the arrears payout at the earliest. Compensation of 50 lakhs must be given to the families of farmers who have committed suicide for not receiving bank loan due to adverse credit rating caused by the failure of state government in repaying PRS dues on time, which resulted in impractical CIBIL score of innocent farmers who were denied loans. The government must also declare a moratorium on repayment of loans to be repaid by paddy farmers of Kerala state
Kerala state till such a time the crisis of repayment of dues settled. Thank you, sir. Shri Advocate Dean Kuriakose ji. Thank you, sir. Sir, due to the failure of Spices Board to support cardamom farmers in Kerala, I am demanding for establishment of a new cardamom board. Sir, the National Turmeric Board was established recently. However, a cash crop of great national importance, cardamom is still under the Spices Board. Sir, Idiki is the district that contributes more than 70% of cardamom production in India. It is an important crop that is an integral part of many cuisines across the country and the world. Sir, cardamom cultivation is beset with many challenges that require a holistic approach to solve. Unfortunately, the Spices Board doesn't support the farmers to the cultivation of cardamom. Sir, both the backward linkage like assistance for cultivation and forward linkage like marketing support is required to ensure the growth of cardamom cultivation in the country. Sir, cardamom cultivation and processing is a highly skilled agricultural enterprise that requires great research and extension support. Sir, the Spices Board is only marginally able to support this requirement. So, I humbly request and I urge upon the government to take immediate action in this regard and establish a new National Cardamom Board at the earliest. Thank you. Dr. D. Ravi Kumar ji. Shri D. Ravi Kumar ji. Professor Saugat Rai ji. Saugat da. Sir, under Rule 377, I'd like to raise an important issue pertaining to West Bengal. Total central dues towards West Bengal under MGNREGA currently stands at above rupees 7,000 crores, that is 7,300 crores. The people of West Bengal feel sad that the union government is depriving us on this count. West Bengal government has appealed to the union government to release the funds for payment under the 100-day job scheme and not deprive the poor people of their legitimate dues. Despite being deprived of the central funds under the MGNREGA scheme, the state government has been able to create 10 lakh mandates under which jobs have been provided to 10 lakh numbers of job card holders. As regards, this is a case of extreme deprivation of the poorest people by the central government. As regards the housing scheme, PM Awas Yojana, both the union and state governments have their share of contribution under the scheme. We are being deprived of PM Awas Yojana funds also. Hence, I urge upon the government of India to take urgent steps to release the pending dues to West Bengal of MGNREGA and PM's Awas Yojana with immediate effect. We have demonstrated before the minister on this issue, but the government is not prepared to listen to us. Thank you. They will rather have us moved forcibly by the Delhi police rather than listen to the oaths of West Bengal. Chandrasekhar Belana ji. Sir, to help students from socially and economically backward classes, SC, ST, BC and EBC, who wanted to pursue higher education abroad, the Andhra Pradesh government signature program, the Jagananna Vidya Videshi Devana scheme was established. In accordance with this program, the Andhra Pradesh government covers the tuition for applications who are accepted to one of the top 200 universities. It covers the entire cost of the students' tuition if they are admitted to one of them top 100 institutions in the global. It also pay 50% or 50 lakhs of a student's tuition fee if they are accepted into one of
the top 101 to 200 university in the global. While this process have increased the number of students from the socially and backward classes seeking higher education overseas. International education is still dominated by students from upper caste, as studying abroad requires a minimum of Rs 20 to 25 lakhs. Although there are number of scholarship programs and financial help schemes, it appears that establishment of national level funds dedicated to students express for higher education outside in India is important. As a result, I asked to get the government to make establishing national level funds to support socially and economically backward communities, educational and advancement of primary priorities. Thank you. श्री श्रीरंगप्पा बारने को माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बावल के अंतर्गत JNPT पोर्ट के निर्माण के लिए सन 1985 में सेवागांव की भूमि अधिग्रहण की थी और सेवागांव को गांव में बांटा गया था। नवीन सेवागांव को 10 हेक्टर और हनुमान कोलीवाड़ा सेवा कोलीवाड़ा को 0.2 हेक्टर भूमि पर ट्रांजिट कैंप के तौर पर देकर उरन के नजदीक बसाया गया है। JNPT के निर्माण के लगभग 33 वर्षों के उपरांत नवीन सेवा गांव के प्रकल्प बाधित नागरिकों को 361 भूखंड 33.64 हेक्टर भूमि देकर बसाना है और हनुमान कोलीवाड़ा सेवा कोलीवाड़ा गांव के प्रकल्प बाधित नागरिकों को 2.56 भूखंड देकर 70.33 हेक्टर भूमि देकर बसाने का इंतजार है। JNPT के यह मान्यता के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से ये दोनों गांव को नवीन सेवा और हनुमान कोलीवाड़ा को पुनर्वसन समझौते के अनुसार अतिशीघ्र भूखंड देने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। श्री सुनील कुमार पिंटू जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं बिहार के सीतामढ़ी, जहां मां जगत जननी सीता जिस धरती से प्रकट हुई है, मैं वहां से आता हूं। नियम 377 के अधीन एक अति महत्वपूर्ण मामले को उठाने की आपने मुझे इजाजत दी, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में हो रहे कुछ त्रुटियों के प्रति मैं सरकार का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसका एकमात्र लक्ष्य गरीब, वंचित एवं कम आय वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ परिवार अर्थात 55 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जिसमें 40% लोग जनसंख्या के हैं जो निचले पायदान के हैं, गरीब हैं, अति पिछड़ा है। किंतु विडंबना यह है कि वही इस योजना के लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। जागरूकता का अभाव है या अवज्ञता का कारण भूलवश अगर उनके आयुष्मान में अगर कोई त्रुटि हो जाती है कार्ड में, नाम के स्पेलिंग, पता में, उम्र में, लिंग में, जिसके कारण उनको सेवा से वंचित कर दिया जाता है, उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक कहीं ना कहीं हकमारी हो जा रही है। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन करने की बजाय हॉस्पिटल उन्हें सेवा देने से मना कर देती है, जो कि उचित नहीं है। इस योजना के साथ साथ सरकार में भी इसका विश्वास कमजोर हो जाता है। इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों
को योजना के प्रति जागरूकता लाई जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका समुचित इलाज किया जाए और दस्तावेज या भूलवश त्रुटि को जिसमें सुधार संभव है उस कारण से इलाज न करने का कोई भी हॉस्पिटल इस प्रकार से मना न करे। ऐसे ही होने से इस योजना की सफलता सुनिश्चित हो पाएगी और जो माननीय प्रधानमंत्री का है कि हर गरीब दबे पिछड़े लोगों का इलाज हो सके मुफ्त में, वो संभव हो पाएगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भर्तृहरि मेहताब जी। Thank you, Chairman, sir. Access to tap water is a basic necessity of every household. To ensure universal access to tap water in rural areas till the year 2024, the government had initiated the Jal Jeevan Mission. However, it is falling short of achieving its objective within the said time frame. Although the progress made under the scheme is acknowledged, the target of providing tap water connection to 19 crore 36 lakh rural households till the year 2024 seems a distant reality because only 55%, that is only 10 crore 71 lakh households have received a tap water connection as of now. About half of the target number has been achieved in 4 years since the scheme was launched in 2019. Keeping this in mind, the claims of the government that rest of the target number can be achieved in just 1 year seems highly improbable. Though the Jal Jeevan Mission has received a high in the 23-24 union budget, it is only so useful as out of 60,000 crore of rupees allocated for the mission in 22-23, only 22,774 crores have been released to the eligible states and union territories till December 2022. Therefore, what is needed is a better implementation of the scheme at the ground level and an expedited release of funds by the center so that universal access to tap water in rural areas can be made a reality in near future. Thank you, sir. श्री रितेश पांडे जी नहीं है। श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल नहीं है। पटेल जी। सर, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे मौका दिया। मैं महाराष्ट्र में चल रहे मराठा और धनगर इन दोनों बड़े समाजों के आरक्षण के अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में बोलने पर खड़ा हूं। पिछले 10-12 साल से मराठा समाज और धनगर समाज आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र ने 4 राज्य सरकारें बदलती हुई देखी है। हर बार आंदोलक समाज और विरोधी दल सत्ता पक्ष पर दबाव डालते हैं। सत्ता पक्ष कोई कमेटी या कमीशन गठित करता है और मामले को खींचते उस सरकार की टर्म के आखिरी महीनों में आरक्षण किसी की तरह से घोषणा कर दी जाती है। आगे चलकर कोर्ट किसी न किसी बहाने कानून के मुद्दे पर खारिज कर देता है। तब तक सरकार बदल चुकी होती है और पूर्व सत्ता पक्ष अगले सत्ता पक्ष को दोषी ठहराता है। ये दुष्ट चक्र पिछले 12 सालों से चलता हुआ है। कानून के विशेषज्ञों को कहना है कि इन आरक्षणों की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार इस विषय पर लंबे समय से मौन में है। आपने विषय कुछ दूसरा महाराष्ट्र इतिहास काल से एक सामाजिक समता, बंधुता और सुधारवाद की भूमि रहा है। इन दोनों समाजों को आरक्षण संबंधी मांगे योग्य है, इस पर में महाराष्ट्र में सभी सकारात्मक मत है। मराठा समाज केवल 150 या 200 सांसद या विधायक चुने जाते हैं, इसलिए करोड़ों मराठे को शिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन का नकारना गलत है। इसी तरह से करके दिया है केवल धनगर
और दंडनीय कृपया शब्दों के सुनिए। लिए भिन्नता की वजह से सुनिए जरा, इधर मैं थोड़ी सुधार कर रहा हूँ भाई, आपने नहीं आपके परमिशन सुधार करता हूँ, नहीं, क्योंकि ये मामला बहुत जोर से महाराष्ट्र चला है। जो लिखा अगर हुआ था, भारत आप तो सरकार बहुत में वरिष्ठ, आप तो कुछ- बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, 2 जो मिनट लिखा हुआ होता है, इन दोनों आपको समाजों के विषय प्रश्नों को परिवर्तन करना है। और अधिक समय दिए तो अनदेखा करना महाराष्ट्र भविष्य के लिए चिंताजनक हो सकता है। सभी देख रहे हैं कि हर दिन आए दिन महाराष्ट्र में चल रहे परस्पर विरोधी आंदोलन, सभा, भाषण और वक्तव्य की वजह से सामान्य जनों के मन में रिकॉर्ड में वही अस्थिरता, जाएगा जो आपने लिख अभय, करके दिया है। अशोक माहौल पैदा हुआ है। इसको आप शून्य पर महाराष्ट्र उठा जैसे लेते हैं इस महत्वपूर्ण विषय में को। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप इस गंभीर विषय को उच्चतम प्राधान्य में कानून सुयोग संशोधन करें और इन दोनों समाजों का आरक्षण संबंधी मांगे पूरी करने के लिए तुरंत कदम उठाए। महोदय, आपने मुझे जो मौका दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं। पहले मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें थोड़े सुधार करके जो अनुमति दी, इसलिए मैं राम आपका मोहन बहुत नायडू आभारी जी, हूं। Thank you, Chairman sir. जी, Thank you, Chairman sir. I wish to raise the issue of cashew crisis unfolding in my district of Srikakulam. Andhra Pradesh is one of the biggest exporters of cashews in India, and Palasa in Srikakulam has more than 1 lakh acres for cashew cultivation managed by mostly small and marginal farmers. Cashew plantations start bearing fruit after 3 years of planting and require proper care to bear fruits. Farmers have borne rising expenses of up to 30,000 rupees annually while selling their produce for prices as low as 5,000 rupees, barely even earning 1/5 of their expenses. Moreover, introducing cheaper cashew kernels from countries like Vietnam and other countries has further dropped the prices in the market, thereby compounding the losses suffered by local farmers. I urge upon the government to step in and provide immediate relief to over 30,000 farmers of Srikakulam by fixing an MSP for cashews after consulting local farmers. Furthermore, the government must reimpose a 5% import duty on foreign cashews to reinvigorate local cashew sales and set up a cashew board to supervise the implementation of such changes at the earliest to ease the burden of the local cashew farmers. Thank you, sir. श्रीमती नवनीत राणा जी, श्री रितेश पांडे जी, धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 के किनारे मालगाड़ी से माल उतारने की व्यवस्था पूर्व में हुआ करती थी। इस रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और विस्तार होने के कारण यह रैक पॉइंट समाप्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से अंबेडकर नगर से रेलगाड़ी से माल लोड करना या उतारने की कोई सुविधा नहीं बची है। इसके कारण क्षेत्र के व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और किफायती परिवहन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे आम जन को अपना माल का उचित दाम और बाजार भी नहीं मिल पाता है। अकबरपुर जंक्शन पर रेलवे रैक पॉइंट की उपलब्धि प्राप्त कराने के लिए जनता आंदोलित और आक्रोशित है। मेरी माननीय रेल मंत्री से यह मांग है कि लोकसभा अंबेडकर नगर के अंतर्गत अकबरपुर में विस्तारित प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बगल बची रेलवे की शेष जमीन पर रेलवे रैक पॉइंट की उपलब्धता कराई जाए, ताकि पुनः माल का यातायात अंबेडकर नगर जिले से सुनिश्चित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगदम्बिका पाल जी, अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन अत्यंत लोक महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या की ओर अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ध्यान बुद्ध के जन्मस्थान कपिल वस्तु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कपिल वस्तु बौद्ध परिपथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटन एवं आस्था की दृष्टि से ये बौद्ध परिपथ सर्किट बनने से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वालों का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही सरकार ने अपने उड़ान योजना से जो रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है, उसमें भी इस क्षेत्र को भी एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात है। इसके फलस्वरूप चाहे वो इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान के सब जगह के जो बौद्ध के
मानने वाले पर्यटक हैं वो दुनिया भर के पर्यटक इस क्षेत्र का दर्शन करते हैं। और बौद्ध सर्किट जिसमें कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, बोध गया है, सारनाथ और श्रावस्ती शामिल है, ये स्थल वर्तमान में लगभग राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले टोटल विदेशी पर्यटकों के 6% के बराबर है। एक बड़ी संख्या है। इन सभी स्थलों में एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो चुकी है, लेकिन जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु, आज भी वो अभी एयर कनेक्टिविटी या किसी इससे नहीं है, जिसके कारण बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती नहीं जुड़ पा रहा। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि बौद्ध पर्यटन के लिए समृद्धि है कपिलवस्तु में भी जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है उसमें एक हेलीपोर्ट की आवश्यकता है, जिससे हम बौद्ध परिपथ की पूरे उस बुद्ध सर्किट को अभिगम्यता को बढ़ा सकें। मैं आपके द्वारा सरकार से बुद्ध के जन्मस्थली कपिलवस्तु में उड़ान योजना के तहत एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के हेलीपोर्ट को स्थापित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री नारायण भाई कजारिया जी। सभापति महोदय, मुझे 377 पे बोलने का अवसर दिया तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में एक नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव केवीएस संगठन की ओर से अनुमोदित अप्रूवल दे दी गई है, परंतु अब तक चैलेंजिंग मेथड कमेटी की और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग न होने के कारण अब तक विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु मंत्रालय की ओर से अंतिम आदेश लंबित है, जिसके कारण विद्यालय के निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया में देरी हो रही है। उक्त विलंब के विद्यार्थियों का पठन पाठन कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए केवीएस रीजनल कार्यालय द्वारा अमरेली में स्थित एक भवन के अस्थायी रूप से केंद्रीय विद्यालय का शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव भी केवीएस मुख्यालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है। उक्त दोनों कार्यों की अंतिम मंजूरी चैलेंजिंग मेथड कमेटी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग अति आवश्यक है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द चैलेंजिंग मेथड कमेटी एवं पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए, जिसके उक्त दोनों प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी प्राप्त हो सके और अमरेली में एक केवीसी स्कूल का माध्यम से विद्यार्थियों का बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्री उन्मेष पाटिल जी जी। Thanks a lot, Chairman sir. The government has launched the National Logistic Policy, which aims to cut logistic cost by half to be near global benchmark by 2030. Sir, by reducing the cost of the logistic from 14 to 18% of the GDP to global best practices of 8%, this policy will benefit Maharashtra, my state immensely, and will also help to increase creating employment opportunities. The government has also proposed a multimodal logistic park in my parliamentary constituency of Jalgaon, which is well connected through a network of roadways, railways, and airways. Jalgaon has immense potential since it has multiple export units and food processing facilities. Due to large-scale production of crops, pulses, banana, grapes, onion, lemons, and as well as gold too. Additionally, there is ample availability of the vacant government land, which can be utilized for setting up a logistic park in Jalgaon. I request the government to sanction a multimodal logistic park in my parliamentary constituency of Jalgaon, which will result in cutting down on transport cost, leading to reduction in cost of goods. This will in turn benefit industries and consumers and create employment opportunities for the people of Jalgaon and provide impetus to the economic development and overall growth of the Jalgaon. Thank you, sir. डॉक्टर सुजय सुखे विखे पाटिल जी नहीं। श्री मितेश पटेल। सभापति महोदय, मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा के लिए श्री अन्न नाम देकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार आम लोगों तक इसे पहुंचाने का अभियान चला रही है। इस दौरान सभी मंत्रालयों को इस अभियान से जोड़ते हुए
उन्हें इस पूरी मुहिम को और रफ्तार देने के लिए भी कहा गया है। श्री अन्न के उपयोग को बढ़ावा देना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक है इसके उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना एवं किसानों को इसके लिए आसान बाजार उपलब्ध करना, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रयास जारी है। महोदय, मेरी सरकार से विनती है कि श्री अन्न जो कि गेहूं और धान की अपेक्षा कम पानी, लागत और मेहनत के उपजाया जा सकता है, जिसमें बदलते जलवायु के कारण सूखे में भी उत्पादन की बढ़िया संभावना है, उससे किसान दूर क्यों होता गया, इस बारे में पूरे देश के किसानों के बीच सर्वेक्षण करवाएं। इसके उत्पादन में कठिनाइयां एवं उत्पादन उचित होने पर भी इससे किसानों को बाजार उपलब्ध कराने में पूर्व की सरकार के नकारात्मक दृष्टिकोण से किसानों की उदासीनता को उत्साह में बदलने हेतु कदम उठाए, जिससे श्री अन्न भारत की एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान बन सके। धन्यवाद। डॉक्टर डी रवि कुमार जी, श्रीमती नवनीत राणा जी, हो गया। नाउ आइटम नंबर 9, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, माननीय मंत्री जी। धन्यवाद डिप्टी चेयरपर्सन सर। With your permission, I move that the bill further to amend the Advocate Act 1961 as passed by Rajya Sabha be taken into consideration. कुछ बोलना आपकी जी, धन्यवाद जी। सर, ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा 5-10 मिनट में थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री में बताना चाहता हूं। ये आजादी से पहले इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 था, फिर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको बनाया था। इसका पर्पस था कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है या लीगल प्रोफेशन में जो लोग हैं, जो लीगल प्रोफेशन में जो काम करते हैं, वकील लोग हैं, उनका कोई रेगुलेशन, इसलिए एक्ट बना। फिर 1879 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट आया, उसमें एक सेक्शन 36 है जिसमें टाउट्स का जिक्र आता है। टाउट्स का मतलब ठगी करने वाला, कुछ गलत बात करके और कि मैं वकील हूं, वकील होता ही नहीं है, इस तरह के सब जो काम करता है उसके लिए टाउट शब्द यूज हुआ है, या दलाली भी कह सकते हो। इसके बाद 1920 में बॉम्बे प्लीडर एक्ट बना। क्योंकि आप तो इतिहास के बड़े जानकार हो सर, आप जो चेयर पे विराजमान हैं, तो फिर 1936 में इंडियन बार काउंसिल एक्ट भी आया। जब देश आजाद हुआ तो विचार आया कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन होना चाहिए, और जो अंग्रेजों ने कानून बनाए हैं उसके अनुसार हमें क्यों चलना। हमारा लीगल प्रोफेशन भी एक नोबल प्रोफेशन है। इसके लिए लॉ कमीशन को ये मैंडेट दिया गया कि हम नई परिस्थितियों के अनुसार जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा रिफॉर्म करें। फिर ऑल इंडिया बार कमेटी भी बनी। इसके लिए उन्होंने कहा एक कमेटी और बना दो। फिर 1953 में जब ये कमेटी बनी, उसके कुछ सिफारिशें आई, और उसके बाद एडवोकेट एक्ट 1961 आया, जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और इसका मूल पर्पज रहा लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने का। इसमें बहुत से सुझाव आए कि भाई इसको रखना जरूरी है क्या, तो इसमें एक सेक्शन है 45A, जो इस वर्तमान में जो बिल लेकर आया हूं वो इसमें इंसर्ट करता है। और उस समय जो टाउट्स को लेकर सेक्शन 36 था, उसके बारे में ये कहता है कि इसकी जरूरत है, एक्ट की जरूरत नहीं है।
लेकिन जो सेक्शन 36 है जो टाउट्स का जिक्र करता है उसकी जरूरत है ऐसा विषय आया और लोगों ने कहा कि ये इसकी जरूरत इसलिए है कि न्यायालय परिसर में दलाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभापति महोदय हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में एक कमेटी बनी थी जिसके लिए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के कमेंट भी लिए गए थे। इसके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी सुझाव लिए गए। सभी ने ये बात मानी कि एडवोकेट एक्ट में संशोधन तो हो, ये जरूरी है, लेकिन इसमें टाउट से संबंधित प्रावधान अवश्य रखे जाने चाहिए, क्योंकि न्यायालय परिषद में दलाली ठीक नहीं है। जो ठगी करते हैं या जो दलाल टाइप के लोग यहाँ आते हैं, ये ठीक नहीं है। दलाली कहीं भी ठीक नहीं है, कहीं भी ठीक नहीं है। और इस समय तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में। जी। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है। जब हर जगह साफ सफाई का काम होना चाहिए तो न्यायालय परिसर भी साफ सुथरा होना चाहिए। इसलिए मैं आपके समक्ष ये बिल लेकर के आया हूं। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 रिपील कर दिया गया है और क्योंकि कॉलोनियल एक्ट है इसलिए, और फिर इसमें ये संशोधन में लेकर के आया हूं कि टाउट्स में इसकी जरूरत है। इसमें एक कमिटी, इसमें हाई कोर्ट के जज हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, इवन कलेक्टर भी इसमें देखेंगे कि ये आदमी बार बार घूम रहा है, ठगी का काम करता है, तो उसकी एक लिस्ट बना देंगे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी उसमें मदद करेगा। लिस्ट फिर वो चस्पा कर देंगे। फिर भी वो लिस्ट में चस्पा होने के बाद भी अगर वो न्यायालय परिषद में पाया जाता है तो 3 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये मैं छोटा सा एक अमेंडमेंट इसमें लेकर के सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे लगता है कि सदन जो इसमें सार्थक चर्चा करके और इसको सर्वसम्मति से पास करेगा, और जो चर्चा होगी उसके बाद जैसे आप आदेश मुझे करेंगे तो मैं जवाब देने के लिए फिर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्री कार्ति चिदम्बरम जी। Thank you, sir. Intermediation is part of our Indian culture. People sometimes always want an intermediary to go between them and whoever they're dealing with. It's a normal part of our culture. We have intermediation in marriage alliances. So this is sometimes in rural areas and in other parts of the country, people need intermediation to reach out to people in authority and power. There are intermediation even in political parties, we know that. By and large, we welcome this bill, sir. Let me be very clear about that. Sir, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. This is what Martin Luther King said. The right to seek justice is a fundamental right to our existence as a civil society. But because of the asymmetry in our society in terms of education, access to people in authority, wealth, an average person sometimes does not know how to navigate the legal system. This is what is being exploited, and some people step in as touts to tell them who to engage, tell them if you engage this lawyer, this will work. So that is where, because of this asymmetry and the complexity of dealing with our legal system, touts thrive. So these intermediaries thrive. In fact, there is a funny joke, which I will say, and I hope the lawyers don't get offended, because I'm a lawyer myself and my parents are lawyers. I come from a family of lawyers. I say this with full responsibility. The joke is that good lawyers know the law, but great lawyers know the judge. So when that is the system, when an uneducated person has to come to court, it is quite natural that somebody has to intercede to help them navigate and help them connect with the right lawyer. This is what is happening everywhere. Because of this, many people flourish. My only quibble with this bill is that, sir, it is targeting the tout in these small courts, the real small tout. In fact, there is in Tamil Nadu, there is a person whose name I don't want to mention, but anybody in the legal fraternity in Tamil Nadu will completely know. Let's call him Judicial X. His specialty is to take Temple Prasad to every single judge and to be photographed.
people say that he can get the matter listed before a particular judge. Now the grapevine is that he can even appoint judges to the court. In fact, I would urge the government to focus on these big fish instead of these small touts who are all operating only in the smaller courts. There is a nexus between touts and lawyers.
उल्लेख किया है कि आज हम उसमें किस तरीके से उस एक्ट में हम जो सेक्शन 36 है वो हमारा कमिटमेंट है। कमिटमेंट हमारी सरकार का है, देश के प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है कि कॉलोनियल लिगेसी के जितने कानून होंगे या जो चीजें होंगी उसको उन्होंने पंच प्राण के में किया था। उस लाल किले से जो 5 उन्होंने प्रण लिए थे उसमें रेड फोर्ट से यह भी कहा था कि हम वो ब्रिटिश की गुलामी की दास्ता की विरासत को न केवल समाप्त करेंगे, अपसलीट कर देंगे। तो आज तो इसको बधाई देना चाहिए। अरे भैया, यू मस्ट हैव पेशेंस, आई थिंक सो, काइंडली इफ यू लिसन टू मी, आई थिंक सो एवरीथिंग विल बी क्लियर। आई थिंक यू टॉक टू योर अधिष्ठाता जी। चलिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे भाई मैं लीगल टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहा हूँ, मैंने व्यक्तिगत तो कोई आक्षेप किया नहीं, मैं तो केवल इस अपने अमेंडमेंट एक्ट पे बात कर रहा हूं। अब प्रधानमंत्री जी का नाम लेने से अगर उनको चिढ़ हो रही तो देश की जनता ने प्रधानमंत्री को उनकी गारंटी को मान लिया है। अब ये कितना भी चिढ़ते रहे और जिस तरीके से तीनों राज्यों में परिणाम आया है, अब इनको सोचना चाहिए। अब इनके नेता का क्या बयान है? नेताजी कहते हैं कि ये भाजपा की जीत नहीं है, ये मोदी जी की जीत है। मैं धन्यवाद दूंगा धीर रंजन जी को, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी के नेतृत्व में है वो जीत है, तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा। नहीं धीर रंजन जी, आपने इसको चैनल पे कहा है, इसको आप चैनल, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ। जब आपकी बारी आएगी तो आप कह दीजिएगा, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं यील्ड नहीं, ये तो आपने आज चैनल में कहा है सौगत राय जी, ये तो मैंने, अच्छा नहीं, मैं ये बात जो कह रहा हूँ तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तब आप अपनी बात कह दीजिएगा, उसका भी उल्लेख कर दीजिएगा। ठीक है, बैठिए। अरे भाई, पंच प्राण जी सुन लीजिए, जिनके नाम लिए हैं उन सबको मौका दे दिया जाए। धन्यवाद महोदय। मैं पंच प्रण की बात कर रहा हूँ कि पंच प्रण में जो उन्होंने कहा, ऑल दीज एक्ट्स आर पार्ट ऑफ colonial legacy, तो ऑल दीज एक्ट्स आर पार्ट ऑफ colonial legacy। मोदी जी in his speech and प्राण from the Red Fort talked about giving up the colonial legacy। इसको समाप्त करने का फैसला लिया है, आज उसका अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लॉ मिनिस्टर को कि उन्होंने इस तरीके का एक कम से कम कॉलोनियल लीगेसी को खत्म करने का काम किया। आखिर हम आज उसी को ऑब्सलीट कर रहे हैं जिसको आप वेलकम कर रहे हैं। जो एक्ट हमारा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का है, तो ये एक्ट को एवालिश करने में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो उस पर भी सदन चर्चा करने में धन्यवाद देता हूं कि सदन में अच्छे ढंग से कार्रवाई चल रही सुचारू रूप से। अभी चिदम्बरम ने बहुत अच्छी बात दिया उदाहरण। उन्होंने कहा क्या थे साहब, गुड लायर्स नोज लॉ एंड ग्रेट लायर्स नोज ओनली जजेज। तो आई थिंक सो, आप तो उस फैमिली के हैं तो क्या कहूं, हम तो आपको ग्रेट लायर मानते हैं, तो क्या आप जज को जानते हैं या गुड लायर? मुझे लगता है सभी लॉ कानून को जानते हैं। ये डिफरेंशिएट करना निश्चित तौर से किसी वकील का अपमान होगा कि हम केवल जज से न्याय लेते हैं, तब मुझे लगता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज दिस एक्ट एबॉलिशेस द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1879 एंड एक्ट दैट डेट्स बैक। ये कितना पुराना कानून, 144 साल, सब 144 ईयर्स एगो ये कानून आया था, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। उसके बाद क्या आया, बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट आया 1920, फिर उसके बाद इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 आया। मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मैं बता सकता हूं कि हाई कोर्ट एक्ट 1861 में क्या क्या प्रोविजन थे जो आज एक तरह से लोगों के ऊपर अगर लगेगा तो लगेगा कि गुलामी की दास्ता की प्रतीक थी। या चाहे लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 रहा हो, या बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट 1920 रहा हो, या इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 रहा हो। तो आज आप ये बताइए कि जब देश आजाद हुआ था, आज तो लोग जाति की राजनीति करते हैं, पार्टी की राजनीति में सांप्रदायिकता करते हैं, उस आधार पे खोज के वोट टिकट देते हैं। पहले देश में प्रायः इन सदनों में आने वाले लोग जिस तरह से थे वो लॉ बैकग्राउंड से ही थे। चाहे भीमराव अम्बेडकर जी का नाम मान लीजिए, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी को मान लीजिए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को मान लीजिए, ये कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी थे। तो इस तरीके से जो लोग उस समय सारे लोग प्रैक्टिस में इस तरह का, उनको ये महसूस हुआ कि हमें कोई ना कोई एक एक्ट ऐसा बनाना चाहिए जिससे हो, और उसी के नाते एक एडवोकेट एक्ट 1961 बना देश में आज़ादी के बाद, क्योंकि इस बात को राजेंद्र प्रसाद जी ने महसूस किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, B.R. अम्बेडकर जी ने किया। तो ये टाइम के साथ हुआ, जब समय कालांतर में बीतता रहा और
जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस के हीरो थे, जो हमारे इंडिपेंडेंस के जमाने में मूवमेंट में जुड़े हुए थे, वो तमाम ऐसे लोग, एक लंबी श्रृंखला है, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो उसके बाद उन लोगों ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को बनाने के बाद जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को, लॉ कमीशन को भी, हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, सब स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन किया गया और सारे लोगों के कंसल्टेशन के बाद एक कंप्रहेंसिव टाइप का एक्ट उन्होंने एडवोकेट एक्ट 1961 में बनाने का तय किया। तो अब जब एडवोकेट एक्ट 1961 बन गया, आज जिस हम इस लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को इसको ऑब्सोलीट कर रहे हैं। केवल इसका जो एक सेक्शन था लिस्ट ऑफ टाउट्स, तो आई थिंक सो उसी को ऑब्सोलीट नहीं किया कि हम अभी भी देश की आजादी के बाद लिस्ट ऑफ टाउट्स के खिलाफ कोई हम एक्ट न बनाएं, कोई कानूनी प्रावधान न दे। अभी भी गांव का गरीब आदमी अगर अपने कानून पाने के लिए आए और वो बीच में उस कचहरियों में, कोर्ट में अगर उन टाउट से, दलालों के चंगुल में फंस जाए, और जिस तरीके से आप देखते हैं आज कि आप स्टेशन पे उतरते हैं या कहीं बस स्टेशन पे या कहीं कोई मरीज आता है, तो किस तरह से आज उस फील्ड में भी वो टाउट लगे रहते हैं कि नहीं आप इस हॉस्पिटल में चलिए, आप इस डॉक्टर के पास चलिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के न्याय, जो सबसे बड़ी न्याय प्रक्रिया कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय केवल मिलना चाहिए नहीं बल्कि ये प्रतीत भी होना चाहिए कि लोगों को न्याय मिल रहा। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने देश में एक स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो आज वो स्वच्छता अभियान अगर न्यायिक प्रक्रिया में शुरू हो रहा है तो मैं तो अपील करूंगा कि पूरे सदन को सर्वसम्मत से इसको पास करना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि इसके पहले भी हमने रिव्यू किया है, जो हम जन विश्वास बिल लेके आए थे, उस जन विश्वास बिल में भी जिसमें 183 प्रोविजन थे, उस 183 प्रोविजन में अक्रॉस 42 एक्ट्स ऑफ 19 मिनिस्ट्री, तो देश ने तो शायद एक इतिहास बनाने का काम किया है। और आप सौभाग्यशाली, आप साक्षी हैं, चाहे हम कहीं बैठे हो, कि आप उसके साक्षी हैं कि उस कॉलोनियल लिगेसी के जो 19 मंत्रालयों के 42 एक्ट ऐसे थे जिसमें केवल ब्रिटिशर्स की मतलब उस दास्ता को परिलक्षित करता था और उन्होंने अपने इंटरेस्ट में बनाया था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन सारे 19 मिनिस्ट्रीज के 42 एक्ट के 183 प्रोविजन को ऑब्सोलीट करके देश को एक स्वच्छता देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये बात तो उसी दिशा में और आगे पहल की गई। और ये जो आज इस बिल को लाए हैं, इस बिल के लाने से निश्चित तौर से एक फायदा ये भी होगा कि ये दिस एक्ट, yeah, this is not a singular legislation. This is a piece of comprehensive mission of the government to remove all obsolete laws in the country. ये तो क्लैरिटी है, मानिए क्लैरिटी क्या है कि हम इस देश में जो भी हमारे एक्ट में है चीजें है, गवर्नमेंट कमिटेड है, सरकार प्रतिबद्ध है कि हम जो भी ऑब्सोलीट लॉ हैं उनको हम ऑब्सोलीट करेंगे जो इस तरीके की चीजें हैं। आज मैं कहता हूं कि ये आज का जो अमेंडमेंट बिल है, ये अगर कोर्ट में उस न्यायिक प्रक्रिया में शुचिता और पवित्रता का काम करेगा, या जिस तरीके से रिमूवल ऑफ टाउट्स फ्रॉम कोर्ट प्रीमाइसेज करेगा, और इसका अधिकार किसको होगा? सरकार को नहीं होगा। उस प्रीमाइसेज में टाउट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस टाउट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कौन इसमें करेंगे? इसको करने के लिए जो मिशन है, जो पावर दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को है, हाई कोर्ट के जज को है। ये साफ है कि की फीचर्स ऑफ द बिल इंक्लूड कि टाउट्स के लिए द बिल प्रोवाइड दैट एवरी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मतलब ये नहीं कि कोई ऐसे आईएएस जूनियर हो, वो आईएएस जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, मुझे रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुकिंग आफ्टर ऑल द रेवेन्यू केसेज एंड रेवेन्यू अफेयर्स, he will be only this power, he can exercise this power, या तो हाई कोर्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज। और जिस तरीके से ये अधिकार तो उन्हीं न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए, कोसी जुडिशियरी से जुड़े हुए लोगों को दिया गया है। ये कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, ये कोई सरकार के या प्रशासन के हाथ में नहीं आ रहा है कि जो हम किसी को टाउट बना देंगे या किसी के खिलाफ आइडेंटिफाई करके हम उसको पेनलाइज कर देंगे या पनिशमेंट कर देंगे। ये हमने सीधे ये अधिकार
हाई कोर्ट के जजेज को दिया है, हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज को दिया है, सेशन जज को दिया है, और रेवेन्यू में जो रेवेन्यू में मुकदमे देखते हैं उनको दिया गया है। आप देख लीजिए। और मैं समझता हूं कि टाउट रेफर्स टू ए पर्सन हु procures the employment of legal practitioner in a legal business in return of any payment, ये तो साफ है। And frequent places such as the premises of civil or criminal courts, revenue offices or railway stations to procure such employment, इस तरीके जो घूम करके गरीब लोगों का या अपने उन मौकिल का या जो न्याय पाने के लिए हैं उनको जिस तरीके से लेकर के उनका एक्सप्लॉइटेशन है, तो मुझे लगता है कि ये तो ऐतिहासिक कदम है। ये कानून केवल एक जगह नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट और नीचे के कोर्ट में जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में इस कानून के अमेंडमेंट होने के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए स्वच्छता आएगा, ये देश के लिए ऐतिहासिक वरदान साबित होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि द कोर्ट और जज में एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रीमाइसेज ऑफ द कोर्ट एनी पर्सन हु नेम इज इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ द टाउट। एंड प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट देखिए क्या है। प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट, द अथॉरिटी इज एम्पावर्ड to frame and publish the list of touts may order subordinate court to hold an inquiry into the conduct of persons। ऐसा नहीं कि किसी इनोसेंट आदमी को, किसी साधारण आदमी को भी इस तरीके से कर दिया जाएगा। तो उनको एक पूरा प्रॉपर इंक्वायरी होगी, कोर्ट्स टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट, उसके कंडक्ट के बारे में, अ पर्सन्स एलिज्ड आर सस्पेक्टेड टू बी टाउट, मतलब जिसके बारे में ये होगा कि ये कोर्ट में लगातार है और ये टाउट्स की भूमिका निभा रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोग दलाली काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को उनके कंडक्ट की इंक्वायरी होगी, उनके सस्पेक्ट में, तब उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई होगी। Once such a person is proven to be a tout, his name may be included by the authority in the list of the touts. No person will be included in such list without getting an opportunity or showing cause actions his inclusion। तो ऐसा भी नहीं कि किसी का नाम डाला जा सकता है। पेनाल्टी साफ है कि any person who acts as a tout while his name is included in the list of touts will be punished with imprisonment up to the 3 months and a fine up to ₹500 or both। तो इस तरह से मानवर कम से कम पहली बार जो आज हम उस एक्ट को एब्सोल्यूट कर रहे हैं, उस एक्ट के एब्सोल्यूट करने के बाद जिस तरीके से है, पहले के कैसे वकील थे आपको याद होगा। मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, कल्याण जी बात करें, महर्षि अरविंद का केस हुआ था, खुद CR दास जी ने खुद अपनी सर्विसेज उनको दिया था। हमारे अधिवक्ताओं की इतिहास को देखा जाए तो शायद संरक्षणों में कि ये नहीं है कि कोई किसी को के पास ले जाने की जरूरत है। महर्षि अरविंद के खिलाफ केस हुआ, उसमें वो नहीं थे, तो इसके बावजूद CR दास जैसे एडवोकेट ने उनको जिस तरीके से अपनी सेवाएं दिया और उनके लिए किया। तो आज हमारे अधिवक्ताओं का इतिहास एक अपने आप में बहुत बड़ा है और इससे एक कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो अपने इस एक्ट से रेगुलेट करेगा, गवर्न करेगा, पूरे देश के जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ है इन दिस कंट्री उसको करेगा। और केवल ये बिल जो पेनलाइजिंग है वो केवल द प्रैक्टिस ऑफ टाउटिंग अंडर द एडवोकेट्स एक्ट, कि एडवोकेट्स एक्ट के नाम के अंतर्गत अगर वो कोई टाउट करते हैं या इस तरीके काम करते हैं, ये केवल उन्हीं के लिए है। और जिस तरीके से आप देखिए कि इस बिल को कितनी चर्चा करके लाया गया, दिस लेजिस्लेशन वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 249वीं रिपोर्ट में देखा जाए तो इन इट्स रिपोर्ट 249 टाइटल ऑब्सोलीट लॉज एंड वारंटिंग इमीडिएट रिपील, तो इस तरह से ये ऑलरेडी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट 249 में भी एक तरह से रिकमेंड किया है सरकार के लिए कि इसको किया जाए, ऑब्सोलीट किया जाए और इसमें इमीडिएट रिपील करने की एक मतलब अपेक्षा की गई है, उसी को सरकार उसके अनुरूप लेके आ रही है। और जिस तरीके से इस कानून को लाने के पहले इस सरकार ने इस बिल पे सभी जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, चाहे जो लीगल प्रोफेशन में लगे, आखिर इंडिया का सबसे लीगल प्रोफेशन कौन है, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मतलब ये नहीं है कि कोई अपने आप सरकार ने इस कानून को लाने की बात की, जो सीधे जुड़े हुए हैं देश भर की न्यायिक प्रक्रिया में, जो अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाले अधिवक्ता हैं,
जो न्याय देने की न्याय की प्रक्रिया या उसको व्याख्या करने वाले उन कोर्ट्स में हमारे अधिवक्ता हैं, उनके उस सबसे बड़े बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी हमारी सरकार ने एक कंप्रहेंसिव बिल बनाने के लिए उनसे कंसल्ट किया। और उसके बाद इस कंसल्टेशन के बाद जो एक इसमें शामिल करने की बात आई कि टाउटिंग इन द लीगल प्रोफेशन इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द प्रोफेशन, मतलब स्वयं अधिवक्ताओं ने माना कि ये न्याय में जो हमारे है, इस न्याय के जो स्पिरिट है, जो भावना है, जो हमारे प्रोफेशन की भावना है कि हम क्या है किसी एग्रीव्ड को न्याय दिला सके। अधिवक्ता क्या करता है कि अगर कोई एग्रीव्ड है या कोई थोड़ा मैं जल्दी कंक्लूड कर दूंगा, तो इस तरीके से है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खुद ही हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें केवल जो 1961 का हमारा अमेंडमेंट है एडवोकेट्स एक्ट में, उस 161 के एक्ट में हम केवल सेक्शन 36 को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वो 36 इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं इसमें कि सेक्शन 30 जो लिस्ट ऑफ द डाउट्स है, उसको हम एनालाइज करने के लिए या न्यायिक प्रक्रिया की स्वच्छता के लिए इसमें जोड़ना है। और ये बिल जो रिपील कर रहा है, कुछ सर्टेन सेक्शंस है जो पूरे बिल को तो हम उस समय के उसको रिपील कर रहे हैं। केवल इसमें जो सर्टेन सेक्शंस रिलेटेड टू टाउट्स अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का है, जिसको कि हम आज हमारे माननीय मंत्री जी लेके आ रहे हैं उसको एक तरह से अपसीट करने की, लेकिन उसके एक सेक्शन को सेक्शन 36 को इसमें जोड़ने के लिए किया है। तो नाउ द 1961 एक्ट कंसोलिडेट्स द लॉ रिलेटेड टू लीगल प्रैक्टिशनर एंड कंस्टिट्यूट्स बार काउंसिल एंड द ऑल इंडिया बार काउंसिल। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज ये सदन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। पूरा देश इस बात के लिए साक्षी बनेगा, गवाह बनेगा कि पूरे देश में जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में छोटे कोर्ट से लेके तहसील के से लेके मुंसिपल मजिस्ट्रेट के कोर्ट से लेके सेशन जज के कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सभी कोर्ट्स में एक न्यायिक प्रक्रिया को बिना किसी टाउट के, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी इंटरमीडिएटरी के अगर किया जाए, ठीक है मैम, धन्यवाद। तो बिना किसी इंटरमीडिएटरी किया जाए तो मुझे लगता है, मैं अपील करूंगा कि सत्ता पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों, इस बिल को सर्वसम्मत से पारित करें। धन्यवाद। जय हिंद। श्री ए राजा। Sir, thank you very much for the opportunity that has been offered to me to speak on this small amendment. Sir, when this parliament discussed the 42nd amendment, the biggest controversial amendment, it was said that the legislative competence of the parliament cannot be questioned in the court of law. That triggered the controversy. Ultimately, it was settled down later by the virtue of 44 amendment. The legislative capacity of the parliament cannot be questioned in those days. That was nailed down. Now, the capacity of parliament's capacity of legislation became a mockery through this bill. Sir, I do not know how this bill was drafted without giving any due care for the legislative competency of this parliament. Sir, ever since this government, BJP government came to power, the parliament is being misused. Most of the state subjects were brought to here for enactment of laws encroaching the state power. Ultimately, state autonomy became laughing stock. Cooperative federalism becomes the laughing stock. Sir, it is a small bill, but I am not able to understand the way in which the nationalism was put up everywhere, even in the Advocates Act. The Honorable Minister says colonial law. Yes, colonial law. 1879, the provision is there. You want to repeal it. But by way of repealing, you are introducing the same section, importing the same section in the new law. What does it mean?
Is it not anti-colonial or colonial law? I'm not able to understand the rationality behind the government to bring this law. Again, sir, the simple reading, how a person can be listed as a tout. Explanation, I quote, the passing of a resolution declaring any person to be or not to be a tout by majority of the members present at the meeting. Who are all the members in the committee? Nothing mentioned. Who are all the members? Then, by evidence of general repute, by evidence of the general repute, evidence must be tendered by a person who is having reputation in the society. All right. The next sentence is very dangerous. Or otherwise. What happened? Article 356. On the recommendation of the governor, a state government can be dismissed on recommendation of the governor or otherwise. That otherwise was used by the president when the Tamil Nadu government was dismissed without government recommendation. Such a dangerous provision for small advocate acts, you are putting same otherwise here. How it is going to be used or misused, nobody can say. Then, come for the meaning for tout. Who procures in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner? What does it mean? Money will go from the pocket of the advocate to the tout. See, this house many times discussed at length about the corruption. The Prevention of Corruption Act says, periodically it has been amended, that not only the receiver, the giver of the corrupt money also culprit under this act. He has to be convicted. The tout is going to be eliminated and given imprisonment or penalty. Does it not mean to say the person who is giving money also liable for the offense? What type of justice you are rendering to the A and B between the money is exchanged? So the very purpose of the corruption, Prevention of Corruption Act itself is defeated here by way of the way in which the bill is drafted. Sir, next one. The first time I have come across a bill that has been submitted to the parliament, may be correct or may not be correct, I may be correct or may not be correct, that objects and reasons were not at all given in the bill. For what purpose we are going to give this amendment? Whether the Bar Council of States, whether the Bar Council of India is going to be consulted when a person is going to be listed as tout or not. What will be the role of the Bar Council? Sir, Chief Justice of India, a decade ago, Justice Bharucha said in the open meeting on the eve of his retirement that the 20% of the judiciary become corrupt. He made an open statement. The only problem for the litigant is a man is having case in a particular court, whether that judge comes under 20% or 80%, how does he demark it? So you want to revamp the entire judicial system, the cleanliness, right from doubts to up to judges. But you small matter, you are not able to draft a clear law to serve the purpose. So what type of purpose is going to be served? Nothing. Sir, ignorance of law is not an excuse. That is the legal maxim. A person cannot claim, I did not know the law. But what about the society? The society, still 30% of people are illiterate, so far as law is concerned. Again, so far as law is concerned, more than 70% of living persons are unaware about the legal system. So in such a situation, yes, you want to regularize the system of doubts, frame some guidelines, reasonable guidelines, but permit or either not permit. A healthy discussion must be there in all forums, including the Bar Council of India. Sir, suppose a junior advocate, not a junior advocate on record. You are designing advocate on record. After the examination done by the Bar Council of India or Supreme Court judges, a man has been designated AOR, advocates on record. A senior advocate designated by High Court and Supreme Court cannot be advocate on record. No, I'm not. See, AOR is separate. Senior advocate is separate. Who is approaching senior advocate? Litigant? No, AOR. The role of the AOR, advocate on record, becomes almost similarity with the doubt as far as the senior advocate is concerned. So, a judicial system needs some
middleman to bypass every pole in the judicial system. Whether that must be eliminated or that will be regularized with the rational application. That is a question before this House. I think that this bill is having no meaning at all because you are completely just mechanically transport a section which is available in 1879 Act to the new Act without application of mind. My only question is, what type of exercise that has been done by the government? Or what type of inference that has been drawn out of this 100 years old law? Whether this provision is essential, if the potentials, the provision is workable or not, practicality of the provisions has been appraised or not. Nothing has been done by this government, but everything you want to say, you want to remove the corruption in the name of Narendra Modi, starting from small bill up to big bill. So my only thing is, don't make this parliament a laughing stock. Don't do the meaningless exercise for which the competency of this parliament is undermined. So revisit the law, take back this law, draft carefully, try to revisit, try to regularize, or try to make a system which is workable in the judicial system. Thank you, sir. Shri Kalyan Banerjee. Thank you, sir. I will bring the attention of the, I want to bring the attention of the Honorable Law Minister through you. First question is, really, every categories of touts in the field of the law have been brought within the ambit of this statute? Is it correct? Tout is there in everywhere, lower judiciary up to Supreme Court. But these types of bill, practically you are identifying few persons who are in the subordinate court or the district court. What is the real intention to identify the tout? I understand this bill is what Mr. Raja has said just now, the replacement of the old provisions of the legal practitioners. Nothing more than that. You are taking that colonial. I have no difficulty. But when you are making an attempt to bring this bill, you think broad. There are a number of touts. Sir, I tell you one thing. It is very easy to identify tout who are poor. Among the poor, how much touts are there in the judiciary who are extremely sophisticated? Can you identify? The process you have started, I understand, appreciate. But the reality is this: tout is everywhere. Tout is sophisticated. Tout is there. Tout is here going to 5-star hotels. Tout is there going to 7-star hotel. Tout is taking you in different places of the country. You can't identify that tout because they are sophisticated. They are coming from very big universities. They are having Mercedes. You can't identify that touts. You can't identify. That's exactly I am telling that you are not, this is not a broad, you are not bringing all types of touts. Today when the discussion is there, let the discussion. I know it will not be done now. Think in future about this, no doubt about it. Let me explain myself. What is this tout, Sylvia? You know, sir, what we know about this? We are laws. What are the laws? Statute law. Correct? There is a law, case law. This is the laws are known to everyone. Statute law and case law. Applicable in the court. All we proceed. There is another law, which is called face law. And face law is the important for having an order from the higher judiciary, highest judiciary. That's the practical thing. And for the face law,
litigants have to spend lakhs and lakhs rupees. You have to invest 20 lakhs, engage 20 lakhs rupees lawyer, you will get the order. Touts are everywhere. Who are the touts? That's the whole difficulty. Identification of tout is necessary. It is very easy to identify a poor man. He is a tout. A lawyer is a tout. Talking about is a tout. But identify, take this system, bring this system, introduce a system to identify real tout in the judiciary, in the judicial system itself. It's correct what has been said. It's correct. It's an everyday's experience. Our judiciary has become, this is today, India, this expense, it has become too much expensive. Too much expensive. Unless you engage a very big face. Very big face in the Supreme Court, you can't have an order. Good money, good law, good justice. Good money, good law, good justice. This is the practical thing in the country. That's going on. What is going on? You identify, sir, I will request you. You have come, you think real tout is where? Real tout is, sir, no one amongst the, even amongst the, there are one grade of lawyers are there amongst them who are trying to, who possess themselves that I am the bridge. I can bring the judgment. I can bring the order from the highest court. I can bring the order from that judge. I can bring the order from that judge. Come here. I will engage him. I will engage him. Don't worry. Sitting in 5-star, everything is settled and everything is getting. He is the main tout. Where is the procedure? How you are identifying it? Since you have brought the bill, I have got the chance to speak. And I am speaking. This is I was thinking for decades together what is going on. I am a man of practical field. I am looking into these things. And these types of touts I will not tell all the judges, but of course, there are very few judges are there in our country, having a very good relationship with them. In their dinner party, they will go. In their lunch party, they will go. Their marriage anniversary, they will go. They will go. We know everything. Everything is known. Someone speak for 2 minutes law, 5 minutes face. Face law is very important in our country today to have an order, to get the justice. And who is getting that? The rich people are getting, not the poor people. Do you understand? Can you think about this country today, this judiciary is? Why the crores and lakhs poor people are not getting justice? Pending before the Supreme Court? Decades after decades. But Supreme Court is very much concerned whether there would be a marriage of the same sex or not. Therefore, Constitution bench will sit and they will go on hearing days in, days out, days in, days out. Peculiar things, sir. Sophisticated pupils, rich people, their problems would be entertained by the Supreme Court. Peculiar thing. I tell you, sir, do you know this same-sex marriage, whether it will be done or not, within 3 days, bench has been constituted, matter has been heard, everything has been done. Do you know, for long 27 years, 7 judges bench of the Supreme Court is not hearing one matter which really pertains to the poor agriculture worker of the West Bengal. Can you imagine? For whom we exist? Do we exist for the purpose of, whether the judiciary exists for the purpose of resolving the problem of the most sophisticated or a very sophisticated things or the rich people? Sir, I tell you one incident. I'm taking your time. I'm sorry. Chief Justice Datu was sitting. I was sitting on that day. I will not take the name of a very senior lawyer, very famous lawyer. He went and he wanted to mention a matter of one industrialist. I must say, Chief Justice of India, Datu said, Mr. So-and-so,
I have a number of matters of poor workers and poor peoples of this country. I don't have time simply because you are appearing for the top industrialist, leaving aside everything. I have to take up your matter. I have heard it. But today's approach is different, peculiar. I am not taking any name. Big corporates, go, big lawyers, give big lawyers, go, mention, his matter will be taken up. What is happening in our country? Poor people are ignored. This is the place. That's the, sir, I must say, this is going on. Sir, point is identified tout and non-identified tout. You are here, mayor making, you are trying to identify the tout. But the big arena, big places are there, big field, but non-identified tout is there. Nobody will tell them. Because they are not taking tea in the street shop. They are taking tea in the five-star hotel. Though they will not be identified. Sir, identification, how can you remove? Highly paid lawyer comes out. They accept it. Don't worry. 50 lakhs. Don't worry. Get the order. Order is coming, engaging someone. He is not there, engaging someone. And that's because of face law. Come. This is happening. Tout is there. Tout is also there today. This problem is. I am coming to a very relevant question now. Tout is there when relatives of any judge is in the field of practice, legal practice. Tout is there. Taking the name of the judge, relative is also holding out threats. It has come into the newspaper. I do not want to take. I do not want to take name. It is coming in the newspaper. It's under investigation. Let it be investigated. So since I have got the chance, I just tell you. Sorry, I just want to tell you one thing. I don't have, the Honorable Law Minister, I don't have any difficulties regarding any transfer. I don't have. I want it. I wish it. I want that there should be a policy. Unless a policy is there, transparency would not be there. Whatever is the policy, you transfer anybody, how, I am not concerned. Give a policy. At least 140 crore people of this country will understand this is a policy. On that basis, transfer would be made. But today, what is happening? Picking up, transfer. Picking up, transfer. If relative is practicing, for that reason, transfer all the judges who relatives are practicing in any high court. Why you are bringing a judge into the Supreme Court, High Court to Supreme Court, knowing fully well that his relatives is practicing in the Supreme Court itself? Why? Why picking up the names? If I am unfit, if I am dishonest, if I am not fit for anything in any court, I am not fit, I am not for any other high courts also. Point is very simple. Then again tout comes. No. Tout will say, this is the problem that has to be addressed. Of course, I support, sir, your bill. But I am on a very larger issue to save the Indian judiciary. For future generation, I am almost at the fag end of my career, legal service. How much? Yes, 8 or 10 years, how much? But save it for generation after generation.
the pain which I have faced, the things I have seen. Problem is this, I have told somewhere, the judges, why they are saved? Supreme Court judges, High Court judges. I can criticize, only here I can criticize because of the privilege of the Constitution, because of the existence of the Contempt of Courts Act. Because they can't criticize, no one can criticize any judge's activities, judge's thing. Otherwise, he will be hauled up for contempt. Our judges of the country are saved only because of the contempt of court. Don't think everyone is perfect, everyone is correct. There are so many persons. I used to take it earlier, it may be some aversions. Sorry, today I don't take it. It's an aversions. It has become a great disease of the Indian judiciary. That disease has to be resolved. I know you are having a limited power, limitation. I know, but this is the field, this is the place where I can tell my words. Let the highest court of this country take note of the contents which I have said. Thank you, sir. श्री एन रेड्डप्पा जी, आप नाम भेजिए प्लीज, अपना नाम भेजिए। श्री एन रेड्डप्पा जी, प्लीज सेंड योर नेम, देन आई विल गिव यू अ चांस एंड देन यू विल स्पीक। Thank you, Speaker sir, for giving me the opportunity to participate in this discussion to introduce the Advocates Amendment Bill 2023. Please, there is nothing to oppose in the bill. I fully support it. This is a welcome step. Advocates for the important part of judicial system. They are not only the officers of the court, but also from the important bridge between those who seek justice and those who are empowered under the law to give justice. These amendments of Advocates Act were long pending and bring about a critical reform in the justice delivery system of our country. The importance of these amendments cannot be understood, and while these amendments are important, questions can only be raised as to accept on the consultation behind empowering the state agencies to act against liars, and secondly, the enforcement of a mechanism that will be required implement of this law. This is because while we want to that so-called Munna Bhai liars punished procedure also be brought about the ensure that there is no unnecessary prescription of any genuine liar, and through these amendments the independent judiciary is not hindered with, sir. One of the most crucial important of the justice delivery system in India is its human resource element, which is the advocate. The role cannot be overstated in the whole process. The act as bridge between the aggrieved and the adjudication institution. They also play important role in shaping our society and not forget their role against courts to arrive at several judgments protecting the environment, sir. In 2017, two years ago, verification of drive by Bar Council of India found that only 50 to 60% practicing lawyers in India were genuine. This number was heavily reported in media. There needs to be a single public register for advocates across the country, which can be accessible by the public to across verify the claims of education qualification for each advocate they wish to engage with, sir.
Advocacy may look like a very glamorous profession, but for those who are in public practice of law, it is for them that it is for the truth, sir. The Advocates Act needs to be further amended to ensure that certain benefits of social security are also extended to the junior advocates, and to ensure that advocates of the profession can retain the best talent in that there is no profession regarding this. I would like to suggest the Honorable Law Minister to take steps, ensure that first generation of advocates are also be benefit from the targeted government schemes for health and housing and other methods of to them to be able to earn respectively for their livelihood, sir. Despite of the important attached profession, these are not concentrate measures to place to ensure their social security, sir. Even new lawyer in New Delhi has to pay around 15,000 rupees for enrollment fee at Delhi Bar Council, charging fees beyond that what is prescribed under Section 24, subclass 1, subclass 5 of the Section Advocates Act 1961, violate the right to equality under Article 14 and denies opportunities the uprising advocates. I am requesting the Honorable Law Minister regarding enrollment fee of advocates. They are not in a position to pay advocates fee also, sir. In this regard, central government has to take some steps to provide minimum financial assistance to the rural advocates, particularly to construct their houses, to have bank loans, and to pay enrollment fees and etc. Sir. Regarding in Andhra Pradesh government, our Honorable Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy is giving 5,000 rupees each junior advocates, all the advocates in Andhra Pradesh in every month, sir. There we have to appreciate the Andhra Pradesh government also, sir. Apart from this, I am requesting the Honorable Union Minister to strengthen this Amendment Act and also to implement the ideas of Dr. B.R. Ambedkar, which are in the Constitution. Union government has to take steps to introduce All India Judicial Service to implement, particularly to appoint judges in all the courts, including Supreme Court, to at least when All India judicial system is there, they are going to impartial like IAS, IPS people. They are going to render some service to the rural level people. Otherwise, people from expected clients, they are not able to get justice from these courts. Therefore, I am requesting the Honorable Union Minister kindly introduce All India Judicial Service in the country. Apart from this, regarding touts also, touts anywhere, any court, on all the department touts are there. It is not possible to curb them. It is not possible to us to take any action against them through law also. In this regard, the Union government has to take steps how to curb the touts system in all the systems, in all the governments in India level. Therefore, thank you very much for giving me the opportunity, sir. Shri Bhartrajit Mehta ji. Thank you, Chairman, sir. At the outset, I should make it very clear. The bill is relating to advocates. Bill is not relating to courts or high courts or Supreme Court function. Our attempt while deliberating on this amendment bill is to strengthen the advocates of our country and the system of jurisprudence in our country. This advocate amendment bill clearly mentions two things. One is to repeal all obsolete laws of pre-independence acts, not totally, but which have lost their utility. This should be borne in mind. All the law is not being abolished. Those laws which have lost its utility
are being removed. And Government of India is doing this in consultation with Bar Council of India. So these two things have to be borne in mind when we are deliberating on this subject. We know the history of Indian High Courts, how it was formed by a enactment of British Parliament in 1861, and subsequently what development has taken place in between. While going through the bill, sir, the definition of tout is also given. A tout means a person who procures in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner. The employment of the legal practitioner in any legal business. This is the first part of the definition who the tout is. But subsequently, in the second subpara, it is mentioned, the purpose of such procurement frequents the presence of civil or criminal courts or of revenue offices or railway stations, landing stages, lodging places, or other places of public resort. So in that respect, it has been very clearly mentioned in the bill that those touts who operate for lower courts, they need to be apprehended, they need to be named, they need their names to be published, and they can be prosecuted. The impression of the government is, or the earlier law was, that touts do not exist in high courts. They don't exist in Supreme Courts. We should not presume that touts do exist. But my only humble suggestion is that a beginning is being made. It was there in earlier enactment, which is now getting incorporated in this amendment, in the Advocates Amendment Law, through this bill. And the best part is, the previous law which was there, now one cohesive law is coming into existence. This was introduced in Rajya Sabha last August. It was passed in also Rajya Sabha last August. It amends the Advocates Act 1961. This bill repeals certain sections related to touts under the Legal Practitioner Act of 1879. The bill provides that every High Court, District Court, Session Judge, District Magistrate, and Revenue Officer not below the rank of District Collector can frame and publish list of touts. This bill makes the act of tout punishable. Means cases can be filed against them, they can be apprehended. But there are two aspects on which I would like to deliberate. One is the practitioner or the legal practitioners, the advocates, what need to be done for them. And the second is about 45, Rule 45 also is mentioned, that is relating to regulating legal education. That also needs to be looked into, which has not been addressed in this bill. There is Rule 36, which imposes 3 primary restrictions on lawyers. Firstly, lawyers are not allowed to promote themselves directly or indirectly. Second is, if a lawyer is involved in a case, they cannot advertise themselves in the media, newspapers, display their photo, or make inspirational comments. Question is, who is going to question the lawyers? Who is going to lodge a complaint against this type of dereliction of duty? Our expectation is the Bar Council of India will take cognizance of it and will deliberate on it, will take action on it. But are they doing that? During last 20, 30 years since the inception of Bar Council of India, how many such cases has been deliberated by the Bar Council? Not a single complaint has been lodged, or has it been lodged and it has been glossed over? In consultation with the Bar Council of India, government is repealing the Legal Practitioners Act of 1879. Now the legal profession will be regulated by a single act,
it is their responsibility to have quality lawyers. Section 36 of the 1879 Act is incorporated in the Advocates Act 1961. Some suggestions I have to make here for consideration of the government. Reform is a continuous process, and it has to be done with tune of time. There should be provisions for professional development of the lawyers in the Advocates Act 1961. There is no such provision even today, that how professionally an advocate can enrich himself. Technology has become all pervasive now. There are many emerging frontiers of law. Law to regulate telecom sector, law on intellectual property rights, Arbitration Act are some of those. Now, online dispute resolution has become a practice. Lawyers need to update with the latest development in the field of technology. Shouldn't we bring in these aspects in our amendment? How to legalize, how to make them more professional, that aspect we are missing. There should be, I would suggest, there should be, government may consider, there should be a national electronic register for advocates. Anyone, anywhere in the country can sit down and find out who are the advocates. Why should they take the help of touts? Or why should we presume that without a middleman, we cannot approach a lawyer? We do not have any such register. The Law Commission in its 184th report had suggested as such. There should be a single database. This would be good to bring social welfare schemes for the lawyers also, because you have a single database of the whole country. There should be a digital interface between the advocates and the clients. This will eliminate the need for Section 45A in itself. Why do we need middlemen when we can have an electronic platform that can connect advocates and clients? I have a query also. Do we need intermediary that is being incorporated as Section 55 in the Advocates Act after repealing Section 36? When we have digital interface, is this provision necessary? Finally, I would also for an Advocates Protection Act. Since states have enacted such law, Minister for Environment, Forest is also present here in this house. Rajasthan has enacted that law. The present law minister is also from Rajasthan. Rajasthan has enacted a state law. I'm not aware how that law is functioning and how much protection this advocate protection law has given. But I think it is necessary, because at times we also come across number of news where lawyers are attacked or lawyers are threatened or intimidated. Advocates need to practice fearlessly. The advocates, after all, are officers of the court. They are important stakeholders in the administration of justice. I believe the suggestions given shall get utmost attention of the government. The other part which I would like to mention is relating to the academic, regulating the legal education that needs to be strengthened. Large number of law colleges are being opened. But what is the quality of the lawyers? We all know. When the quality of the lawyers that are coming out from the law colleges, it is not only affecting the bar, it is also affecting the bench. So keeping that in mind, I think it is of greater need to look into these aspects also and to bring a comprehensive law in favor of the advocate and our advocacy system. Thank you, sir. श्रीमती सुप्रिया सुले जी।
On behalf of the Nationalist Congress Party, I stand here to speak on today's bill of the Advocates Amendment Bill. Sir, Meghwalji has been a colleague to all of us and a pleasurable colleague for a long time. And he was the colleague who brought in the Women's Reservation Bill. And he's really lucky that he has brought in a bill, though it's not implemented. But he's lucky that in his legacy that he will leave behind, he'll be one of the finest ministers who has brought something which is very close to our hearts. And I'm not taking away his intent of this bill which he has brought in. I have only a few suggestions. I'm not a lawyer. Most lawyers have spoken before me. But the intent of the government, I'm sure, is very clear about what they want to do. But I have a few suggestions and questions to ask them regarding the implementation of this bill, which is actually really small. But there are a few questions I'd like to ask the Honorable out of my lack of legal knowledge. Is this that he says, what is a tout? Now, Mehtabji has spoken about it, and so has Sri Raja from the DMK. But I seek a clarification from the Honorable Minister that he says that, which already Mehtabji has read, that who procures in consideration of any remuneration. So it's a one-sided thing, any remuneration. So it's a one-sided thing. See, in the Corruption Act, both parties are considered to be making a mistake. Here, you are only considering one party to it. So should we not make it broader? And whoever engages or whoever hires, both ways, I think the practice is wrong, right? So why should only half the person be punished? So if you're really trying to remove touting completely, why not include both the parties, is my question. So if he could kindly clarify on that. The other question for me is that who are the members present at every meeting? There is no clarity of it. In 45A, they've written that the explanation is the majority of members present at the meeting. Now, who will be the members? Who will decide what will happen at the meeting? Who will decide just with such a small thing? Who is a tout? And who will be taking the decision? There is no clarity about this. Now, this is like Rajaji said, I'm reiterating the point, but there are no objects in the bill. It's probably little, I mean, it's a lawyer's bill which has such poor drafting, unfortunately, because there is a bill has to have its objectives. So there is no objectives in this bill. So what is the real reason of getting this bill? I'm again not taking away from the intention of the government. I'm sure the intention is, but when you are doing something for lawyers, isn't drafting and implementation most important than not just intent? Life is beyond intent. The other thing is about reforms, which Meghwalji said. Sir, I have never dealt with lawyers in my whole life, but in the last 6 months, I'm flooded with lawyers in my life, be it Election Commission or Supreme Court. And there is a saying in Marathi, sir, if with your permission, I would like to say it, that in Marathi they say, जो होशियार होता है ना, वो कभी कोर्ट की सीढ़ी नहीं चढ़ता है. जो होशियार है, तो कभी कोर्टाची पैडी चढ़त नाही. अभी मैं होशियार नहीं हूँ, अभी मानना पड़ेगा, मैं तो चढ़ चुकी अभी. There was no option. So I had no option but to climb it. And clearly when you go to court, there are a lot of issues that are raised. The tout issue is discussed. But my whole point is there are a lot of reforms required in the court. I mean, justice delayed is justice denied. I don't want to go there. I know that's not the purview of the bill. But even one major point is injustice anywhere is a threat to justice everywhere, is what Martin Luther King has said. So I think this is a very broader role that we need. We really need to expand this bill, the course of this bill, which whenever we meet young lawyers, anywhere we get, you go to states, like somebody from YSR Congress, Jagan Mohan Reddy ji's party said that they are giving 5,000 rupees a month to young lawyers. In Kerala, they give, I think, 2,000. So is there something to engage all these youngsters who are studying very hard to pass it? So is there some social program this government has in mind, like most states are doing? That is my first question to this government. To reiterate, which technology upgrade? I think with technology, so many things are happening now. So is the entire game for lawyers going to change in the next few years? So how do they skill themselves better? I mean, this whole thing about colonialization has been discussed. So it's a past, it's okay, good or bad. I think it's not been that bad on it. So let's not just criticize our history. The way forward is change, and change is inevitable in everybody's lives. And that's what policy is also. Policies also have to change with time. Look at the life today, something like artificial intelligence, something we didn't even expect
a mobile phone we didn't expect about 10 years ago in our lives, which has actually changed our lives. So every profession is changing. So are the lawyers. So is there something this government has in mind for technology upgrade of all the lawyers? The Protection Act, which Mehtab ji talked about, I'd like to take it a little forward, that many governments all over the country, not just talking about advocates, but they are even talking about doctors and press safety and security, because somehow I do realize, and we must all put our minds together in this government and in parliament, that there is somehow so much anger in society nowadays. I don't know where this anger is coming from, sir. Even in Maharashtra, we are having a lot of challenge. I'm not trying to digress, but I'm just giving you a small example. Please don't misunderstand what I'm saying. There are a lot of agitations going on in Maharashtra today on reservations, sir, be it Maratha, Dangar, Lingayat, Muslim Arakshans. Lot of stone pelting is suddenly happening. So there is clearly some anger breeding somewhere. You hear doctors getting beaten up. You hear threats like Mehtab ji said about lawyers. There are press people who are getting beaten up. So there is something missing somewhere, sir. I think this entire House Parliament with legislation, we even need to discuss all these social issues, because the intent of changing people's lives for the better is what, that's why we get elected and come here. So at policy level, the intent of the government to bring in to removing of the touts is a very welcome step. Sir, the only thing when I was hearing about touting was, आपको भी याद होगा हम लोग सब थे, तभी तो मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं, तो वो टाउट्स खड़े रह के वो टिकट सिनेमा की बिकते थे, 10 रुपया का 100 रुपये में टिकट, we were iPad वगैरह नहीं था. That whole touting business is over, because first day first show, life out of us is over. So technology does evolve life, so it will probably eventually do remove touts. But till then, can we do something better, which is simpler, positive, and like Megwal ji said, Raja ji said, I would like to reiterate their points that why not bring a compressive bill, bring it, we could put it into the law ministry. The law minister is very fine. He's very supportive to all the demands of women that he did for us in the women's reservation bill. So I'd request him to take this back. Let's all take all the points suggested by all the renowned lawyers in this house, bring a more comprehensive bill, take all the feedback, maybe send it to a standing committee. There are good lawyers, even in the, I think the environmental minister is also a lawyer, if I stand corrected. Maybe some feedback from him also as a lawyer, and have a more comprehensive bill in the larger interest of the advocates of this country. Thank you, sir. Shri K. Sureshi. Sir, give me opportunity to participate in this bill. Sir, let me begin by quoting Mahatma Gandhi ji, who himself was a lawyer and an ardent champion of justice. An unjust law is itself a species of violence. Arrest for its breach is more, so states Gandhiji. The quote means that any law must be aimed at delivering justice and vacating grievances of the oppressed, and if a law is unjust, arresting someone on the basis of the law is a form of violence. So the law has to be just to itself first. It is the context of the bill and my speech. The bill titled Advocate Amendment Bill 2023 is aiming at the insertion of new section, which is section 45A in the 5 of the Advocate Act 1961, which grants power to frame and publish list of touts to every high court, district judge, session judge, district magistrate, and every revenue officer not being below the rank of collector of a district. Each as regards their own his own code, and the codes, if any subordinate there. I have certain observation and recommendation in this regard, which are follows. As per the law, the authorities empowered to frame and publish a list of touts as provided under section 45A should be confined to only judicial authorities and not executive magistrates. If the district magistrates are given such power
to frame rules. We cannot ensure transparency in finding out actual doubts as defined under section 45(7)(b) of the amendment bill. Sir, similarly, the offense under the amendment bill as provided under section 45(6) may be cognizable offense and the penalty be enhanced to minimum 1 year and fine at least 10,000 or else no purpose would be served. Apart from these suggestions, I would like to ask the government through you, sir, that who is the tout and what are the benchmarks that you will use to identify a person as a tout. It is absolutely agreed that touts are a menace to the courts and justice system. What about people who would be implicated as touts when an excessive power is given to the courts? Any innocent person could be branded as tout, and that will be a dangerous situation. Sir, the question here is, we live in a highly polarized nation, divided by hatred and intolerance and discrimination. In this scenario, if excessive powers are given to the officers of the court to determine any standard procedures for fixing the modes of appeal for a person branded as a tout other than appeal. This mechanism is problematic at many levels as appeal system in many occasions is found to be biased, and therefore I demand that appeal committee must be consist representative of SC/ST community so that communal representation is ensured. I hope the Honorable Minister will agree my suggestion. Apart from this, I would also to be add that there are many issues concerning the legal system, including the reservation for scheduled caste, scheduled tribe in appointment of judges, the higher courts, which has been long-standing demand for many decades. I would like to appreciate Honorable Minister Shri Arjun Megwal ji, who is coming this ministry. So he also always for fighting the cause of untouchable people. In this law ministry, in your period, you have to take so many mechanism for the representation of SC/ST in the Indian judiciary. I also demanded that young advocates of SC/ST community must be given necessary stipends and financial support systems during their practice, and juniors, as they are finding it difficult to survive in the present condition. The demand for high court, the demand for another important demand I would like to bring your notice, our long pending demand for the high court benches. So in various states, there is a demand for high court benches. In Kerala also, long pending demand to set up a high court bench in Trivandrum. So I would like to request Honorable Minister to consider our long pending demand. Sir, furthermore, I would like to conclude saying that the amendment aiming to identify and expose touts must not become a tool for opposition of any individual, and justice in the fairness must be implemented. With these words, once again, I congratulate Honorable Minister Sri Arjun Megwal ji as a law minister in this country to bring this important legislation. Thank you very much. Thank you. Shri P.P. Chaudhary ji. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय सभी सदस्य इसको सर्वसम्मति से पास करें। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मेघवाल साहब को कि इस बिल को आप लेके आए, और इसमें 2 एस्पेक्ट जो सभापति महोदय बहुत
प्रैक्टिशनर एक्ट जो है वो 1870 उसके सारे ऑलमोस्ट